अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने एक लॉ दी थी कि ग्रेविटेशन के बारे में कि कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज़ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज़। मींस जो फोर्स है दो बॉडीज़ के बीच वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही फोर्स जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच जो जितना भी फासला होगा उनके उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बीच जो फासला है वो है आर, इसके इन्वर्स 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो लेट्स नोट द राइटिंग नोट्स according to Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, that in universe all the bodies attract each other with specific force. एक specific force के ज़रिए जो है ना तमाम bodies universe में एक दूसरे को attract करते हैं. Such force is directly proportional to the product of masses. Product of masses m1 m2 है और यही force जो है ना directly proportional है m1 और m2 के and inversely proportional to the square of distance between them और inversely proportional square of distance between them. So mathematically हम इसे लिखते हैं f is directly proportional m1 m2 equation A. F is inversely proportional 1/r². This is equation B. Combining equation A and equation B we get combining f is directly proportional m1 m2 upon r². प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं. कांस्टेंट 1 है वो हम लिखते नहीं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं. कांस्टेंट की जगह हम जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी यूज़ करते हैं हम m1 m2 upon r², where g is gravitational constant. Where g is gravitational constant and its value is 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square per kilogram square. ये इसकी वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की और इसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये थी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Thank you so much for watching the video and stay tuned for next videos. Thank you so much for watching. Thank you.